be a really, really exciting day. We are planning to get a lovely guest on, and she's a very dear friend to me, and she is a spiritual healer as well as a nutritionist. So, yes, let's go ahead and see how this is going to go. I'll be back in 2 minutes and I will be connecting with her. Give me 2 minutes, yeah? Okay, I do not see many people on, but doesn't matter. Eh, I'm just connecting with Rihanna, and we shall have this lovely live podcast. Rihanna. Let's wait for a while and okay, someone wants to join. And what made you get here? All right. So, my name is Rihanna. Thank you so much for inviting me on this channel. Um, you have known me for, I think, good 20 years now, right? So, or 20 years, I'm guessing, 20 years, About, right? yeah, about 17 around. Right. So, we were very different back then, right? That's true. So, now we have come so far. How did we change? Our life experiences taught us. It was pretty much guided. It was never thought about, or we never thought that we would get into spirituality. You are spiritual yourself, right? So your life I got experiences, spiritual because of you. So yeah. But well, I have right, always been spiritual, but I never knew I was. right. Yeah, I mean, people do come into your life to show you the path, basically. If you're meant to be in it, you will be. Like what we are doing today as well, when it reaches out to even one person, right? It's going to change somebody's life. So that's how you look at it. So how did I get there? Is my life experiences. I mean, I've had so many downfalls in my life, and spirituality was one thing which kept me sane during that time. That's how I got into it, because you start having immense faith in divine or God, whatever you How believe did in. you know that there is something as spirituality? What made you I mean, was it because of your hard times that you wanted to get to something that would give you that strength to move on because you were lost? And that's why you found it? Yes, totally. So what happened is when things were not going your way, you look for answers, you seek for answers. That's when you start going within. Until then, you wouldn't.
You will be very, very distracted by the external. You're like, ये ऐसे ही चल रहा है. So I had two choice. Either change something within me, go within and figure out. But that was guided. Trust me, it was guided. Right people came into my life to show me this direction. I mean, if you ask me this question, I wouldn't know how I got into it. Even when I'm looking back, I can't remember how I got into it. But, huh. So let me, I have an answer to this. So I have Okay. two other friends. Okay. Her name is Prajna and Suman. These two, Yes, we are three you of, told me. You yes, I think the three of you were together doing this. Yeah. yes. So what happened is we generally, Suman is the one who initiated saying that let's do Ho'oponopono. Okay, that is basically a forgiveness prayer to yourself and divine and whoever you want to forgive. It's a very strong prayer. I still do that. Right, right. There's a story behind it. A man who started it in Hawaii, he could heal the entire town without even interacting with them. That's the story behind Ho'oponopono. That's It's how all about the powerful. energy, I guess. Right. So Yeah. he put an intention saying that I want to heal these many people, right? These many people. And that's how basically, this whole thing came into act, right? So my journey, when it comes to back to my journey, what happened is, so we all sat together and they said, let's start this Ho'oponopono. And we didn't even know anything about it. We just said we are going to do it. It was 8 minutes uh, meditation. So I started that and it was fabulous. What moved inside us, we didn't even know. We were not aware that we were actually getting into spirituality. We just did it essay. It was a guidance, okay? And once we started doing it, once we actually started doing it, we actually did it every single day after that. I think for a good few months, we were just continuing doing it without even But did you knowing the believe in what you were doing, or you just did it because it was just told to you to do it? uh, like I said, we were not aware of what we were doing, but we were feeling good about it. It was more of feeling good about it. So Right. when I started feeling good about it, and that's when something moved. When situations came in front of me by then, okay, any problems or anything which came in front of me, only thing which I said is, I use this for prayers. Okay, I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. And something started moving. And I have a saying which I always used to tell you as well. When there was problem, I would say, whatever happens in your life happens Happens for for your the good. highest good. That's Okay. right. Yeah. So Yeah. so these kind of situations, when it arose, the problem when it started arising, I exactly knew it is happening for my highest good. It is for my growth. When you see have a downfall in your life, always remember that is leading you to the right. If the building is not I think you just built have to or stay strong at that time when you're falling. That's what and matters. not allow your mind to take over. We'll be talking about it with regards to food as well. Yeah. Mind is everything. Mind plays a lot of games, True. so you True. need to align that and shed all the ego layers. There is a vibrational chart which we always talk about. So it's like a pyramid. So there are a lot of these layers. So one would be shame, guilt, fear, pride, desire, jealousy. These are all lower vibrational energies. Absolutely. Okay. So when you actually get rid of these things, then you come to a middle stage, that is acceptance and surrender to divine. Okay. So after that, there comes a phase. That's what is called whatever happens, happens for your highest good. Okay. So that is the middle range. That's your vibration basically. How are you vibrating at? It shows. Okay. And उसके ऊपर आता है अपना peace, joy, reason, and love. Okay. Love is the utmost, highest, most vibration. उसके ऊपर आता है enlightenment, like how Gautam Buddha or your Jesus Christ, they all had that enlightenment. So Right. that is beyond love. You will have love for everybody, regardless of who it is, because you will start feeling ki everybody is vibrating at a certain level.
That's the reason, and they're carrying that baggage within them due to their inner child, whatever they went I through want to in their talk about childhood. this, and I'm sorry I'm interrupting you. I would like to talk about this part of the baggage because people tend to not understand why they are being given a certain, why certain person is behaving a certain way, why something is happening to only me, and why suddenly walking in the road you meet with an accident. There's certain I things. just did. I just You did. just did, yeah. So there is a Yeah. reason behind when these things happen. And there is the past that kind of carries forward, and when it carries forward in this life, you end up kind of holding yourself and working on it and forgiving everything around you in order not to go ahead with what you are coming with, the baggage that you're talking about. So I want to hear that from you more. All right. So whatever we go through in our childhood, before that, doctor and surgeon, hi. Nritya, Rachna, hi. They're saying hi, Yes, so I think yes. I'll just say Hello, hi hello, as well. everybody. Hi, Taushi. Taushi Thank you for Sinapko. joining. Bye, bye. Yeah, Thank you yeah. for Thank you joining for in, coming. everybody. Sorry, we've been a little engrossed into our conversation, but this is Rihanna, and we are having a very, very interesting conversation on spirituality. So please stay And on, and nutrition. any kind of questions, anything anybody has, we will stop for answering you. Yeah. Right. So I was talking about inner child. Now, inner child wounding is everything. What is inner child wounding? When you have a child, you're telling a child, for example, I'll just give you a basic example. You're telling her money doesn't grow on trees. What are you putting into your child's head? You're telling her it's very difficult to have money. It's very difficult to have money in your life. As they grow up, they become very stingy. Even to spend that money, they'll think 100 times. You know Yeah. why? That has been put into their system or your subconscious mind or your DNA saying that यही है, यही ऐसे ही होना है. जिंदगी बहुत मुश्किल है. It's very difficult to earn money. You have to work very, very hard to have everything in life. No, if that is your belief system, which you've been True. carrying forward, then that becomes your reality. Say Right. you have seen a relationship which is broken, okay, in your house. Father and mother are fighting, and you have only seen them fighting, and the child is going through hell, basically. तो क्या होता है? As they grow up, they end up attracting such partners into their life who's toxic. Because The reason, everything they think is not okay because they've seen that not okay in their life. right? So they end up, and how do you stop this? That's where spirituality and meditation comes into picture. When you do inner child meditation, okay, there is something called karma cutting as well. I'm not going into that part, but let's go into the basic of inner child. When you actually go back into, there's something called mirror work, which I actually specialize in. I do healing work for people, where you go back into your childhood. Okay, you visualize yourself, your chota version. You actually speak to her because she will be very rigid first time when you do it. She is not willing to come out of her shell or comfort zone. But when you actually call her out with lot of love, telling her whatever has happened, it's not your fault, and I need your help to shift this. I really need your help to shift this whole scenario, today's reality. Will you help me? You, as an adult, you're talking to your own self. And when you actually talk to her, give her that love in the heart wherever it requires, right? जहाँ space में, जहाँ भी प्यार की जरूरत है, you give that love to that part. Trust me, the magic begins there. Because then you actually put back that inner child, give her that love, talk to her, everything moves. And then you see the reality shifting. And it's not like you do one inner child and then it's done. No. What happens when you do, especially say you do one session of inner child for, say, um, uh, anger. Okay, for example, you're doing it because she was very angry as a child. So you're doing it for that. Once you do it, the same situation will again pop up in your life. It happens just to Right. test whether it is completely cleared or not.
but you must watch how your reactions are then. Are you still feeling that anger, reacting to those people who actually angered you in the past? Or are you Right. feeling okay? If you're really feeling okay, that means that part of you is healed. So this is an intense work which happens inwards, all right, which really happens inwards, and you're changing your DNA, you're changing your subconscious mind and completely shifting everything. And this applies to your mind, this applies to your body. That is, if you feel that you're going to lose weight by eating certain khana, you will shed weight. Okay, it's not, there are some people who will follow the diet, but still they're not shedding. You know why they're not shedding? The reason being is their mindset is like, nahi hoga. To nahi hoga. It's Yeah, what you believe from inside. So I absolutely. always tell them, there are some of my clients who are like, I mean, I'm saying it loud here, but that is the fact, where they might just go out someday and they're like, they've eaten something at a wedding. They're following a strict nutritional meal plan. And one day they go out and they end up eating something outside the meal plan. Okay. Right. And they're like, oh shit, I ate this. I said, it's fine. It is fine. Don't go back into guilt. For me, Mm. emotions are everything because it is very. So next day you can work on it. It's okay. Lekin ho gaya. But don't go back and worry and guilt. That is what you're adding up into your body. Why is it that when a person um, um, has diabetes, it is all stress related. Most of our True. diseases are in body is all stress related. Okay, if Infinite that is Explorer, stress. hello. That is Akash, Rihanna, by the way. Oh, hi, Akash. Hi. Finally, we are doing this. We spoke about all this. By the way, guys, we had spoken about all this 3 years ago, 2 years ago, that will come online. I will invite you one day. I was That thinking of is, those yes, days. yes. You said, See, it's Rihanna, all in the you mind, must yo. come. It's all in the Yes. mind. Yes. So when you actually invited me, I was thinking of those days that you actually mentioned, यार एक दिन मैं पक्का तुम्हारी जिक्र करूंगी, तुम आना ही पड़ेगा. You did mention about it, and today Yes. when it happened, I am actually proud of you that you're doing this, and Thank you. I felt everything is coming together. I mean, Yeah. my life shifted drastically because see, that's another thing. How I got into certain paths, say even nutrition for that matter, food was always a major part of my life. Like I used to run restaurants and stuff, but I never had a clear cut vision as to what am supposed to do with my life. Right? I mean, I was doing makeup before that, running the restaurant. But you know what? The minute I got into healing work, that also happened by chance. I never planned it that I'm going to take it up as a profession or I'm going to help a lot of people. Even that happened by chance. We were in some group where we do group meditations, right? I mean, every day one person would guide, okay, another person, the group of people. And some of them said, okay, your meditations are very good. Can you please take it up as a class? That's where I started. And I realized I'm good with it because last 7 years I've been meditating. So I knew why God was making me meditate every single day today. There's a reason. I have one question, Yana. For me personally, meditation doesn't mean dhyan lagana. For me, meditation does mean I go into the silent zone and not have try not to have any voice around you. That's not meditation for me. What can you like be a little more specific on when you talk about meditation? Because normally when people here you say I am into meditation, they understand the fact that meditation means going into the silent zone, but it is not only that. So which meditation are you talking about, Rihanna? All right. You're absolutely right when you mentioned key meditation is not just about going within and just keeping quiet and being silent and focusing on your breath. That is okay for a beginner. That Right. is okay for a beginner because they don't know how to focus. It actually builds focus. Your third eye, it actually strengthens when you actually focus on things. But is it applicable for everybody? No. I'll tell you how. Some people are very happy doing yoga. Some people are very happy doing cooking.
Some people are very happy dancing or singing or even playing some instrument. Even that is meditation. It's Right. about your daily routine, what you have, okay? But Mhm. you want to calm yourself down, pull your creativity out, go out there and give that space to yourself. Give that me time to yourself. That is meditation. That's But the reason as you keep people. That's the reason people say that music is my how do you call it? therapy, therapy, Therapy. therapy, Yeah. Yeah. even drawing, sketching. So it's Right. not necessary. See, there are some clients of mine, they're like, यार मेरे से नहीं होता है, ये सब करना. मैं बोलती हूँ योगा कर लो, जो आपको पसंद है वो करो. You don't have to come back to me and say यार meditate ही करना है. Only if you like it, do it. If you don't like it, it's fine. But don't give work to your mind. Mind से दूर रहो. Why I'm saying mind से दूर रहो? Mind को दूर नहीं रहना है. Literally means it does not mean you're actually putting it away. What it means is mind will keep chattering. Say you want to first time when I have to come on live or when I had to speak in front of the camera, there was a lot of mind chattering going on in my head, saying that कैसे यार करूँगी? क्या होगा, क्या कैसे करूंगी, क्या Right. होगा. That is your mind speaking. कुछ नहीं Mhm. होगा. But when you say कुछ नहीं होगा, that is your soul talking. The soul always knows what you Yeah. are meant to do. So that is what I meant, don't use your mind. Mind को use करो calculations के लिए, दिमाग लगाने के लिए, पढ़ाई के लिए. You, don't allow your mind to control you. Right. The minute you do that, your soul starts expanding. Soul is situated just uh, behind your stomach area. Like I always visualize it as a crystal ball, which is expanding. You can visualize whatever you like. It's your magic. It's your world. True. Universe is also within you, actually. बाहर कुछ नहीं है, Absolutely. you know. But as you keep meditating for a longer period of time, तो अभी भी मैं अगर क्लोज करके 2 मिनट में आई कैन सिट एंड मेडिटेट. यू आर इन अ मेडिटेटिव स्टेट. यू थिंक व्हाट आई एम स्पीकिंग. मैंने कुछ भी तैयार करके आई हूँ, कुछ भी नहीं. हाउ एम आई स्पीकिंग? Because that is the guidance given by divine. You have direct contact with divine, as in God. Right. इतने सारे ideas जो आते हैं, वो कहाँ से आता है? You think you are doing it? I'm sorry, no. Right. You're just doing it as per the guidance from above. I have one more question, Rihanna. How do you deal with people who say all this is bullshit, it's not something which really works. It is you who need to do it. It is you who has to figure it out. There is people who don't believe in God, or people who don't have that thing. How do you answer to such people? What do you respond, whether meditation works or not? My responsibility in my life to heal my own self. My responsibility is never about healing the entire world. That's right. That's Okay, very so nice. what I meant is it does not matter who agrees or who doesn't. That does not hamper my energy. Just Right. because I'm not into competition, I'm neither into anything. I'm only here to build myself. As you're growing, right people will get connected to you. And the ones who are not in your vibration, which I spoke about earlier, they will not come in contact with you. अगर आ भी गए, you just smile, it's fine. Because it does not affect me. Frankly, it doesn't affect me. Right. जिसको because you come to that state where you're very peaceful. These days it's more like I keep telling you, my mind is completely empty. It's more like I'm just अभी क्या करना है, पॉडकास्ट करना है, इसके बाद क्या करना है, ओके जाके मुझे खाना बनाना है, To the सुशी बनाना point, है, ये yeah. सब. You're at To the the moment. point, I've started living in present, not thinking past, not thinking future. So that Right. way you're not draining any energy. Hmm. I've never been this energetic all my life, Harmony. All You my you life. look younger and happier. Absolutely. The reason being is it is because I don't have that unnecessary chatter
which is going on in your head. That is the one thing which drains you. If people can understand that chatter is something which actually drains your energy, when you start seeking validation from outside, when you start feeling, oh, ye judge karega, wo judge karega, ye nahi karna hai, wo karna hai, that's where you get drained. तुम Right. हजार चीजें दिन में कर सकते हो. Your body will give won't give up because your mind is completely empty. Hi Puneet. हेलो पुनीत, मैं मुंह नहीं बना रही, मैं बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही हूँ रिहाना को. बट थैंक यू पुनीत आने के लिए. प्लीज लाइक करना, ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक द लाइव चैट. एंड if any of you have any kind of questions till now, you can put it down, and Rihanna will be more than glad to answer it. We Yeah, are going on with the chat. In case you have any questions, do write it and we will look at it. right. Rihanna, I had one more thing. You were talking about inner child. Can you go a little more in detail about it? Uh, Inner child, what would you like to know? I mean, if I may know, like, Now, when thoda I sa. say inner child, I mean the first time when I did the inner child, it wasn't easy for me to kind of get my inner child in front of me, because Right. the visualization, everyone, that's where you have so many things in your mind that you end up thinking. And when you close your eyes to actually visualize a certain thing, you are not in that frame of mind to visualize what you want to visualize. You have 10,000 other things. Oh, this is happening. Oh, that is happening. You have 10 things going on, but you don't have the thing which you really want to, I mean, for what you have closed your eyes for. So that's There are something two which I ways. want to know. There are two ways of doing it. Okay. Two ways of looking at it. One is doing the breath work. Okay. When you actually breathe in and out couple of times, what happens? It creates focus. And keeping an intention saying that I let go of any thought, my mind, I calm my mind, I calm my body with breath. Keep breathing in, deep breath out. It actually aligns you. Once you're rooted, grounded properly, then you're going to directly अगर आप बोलोगे कि मुझे inner child visualize करना है, you will not feel it. Second way is go to somebody who can help you. अगर खुद से नहीं हो रहा है, Right. first few times, go to somebody who can actually help you with it, and they will guide you. And after some time, you yourself you can do it. So that's how I don't The tell way my you did it clients to keep me. coming. Yes. I normally don't tell my clients keep coming back, keep coming. I never do that. I tell them you Right. only come back when you require me. Otherwise, Right. don't come back to me. Because what happens, they'll start feeling needy and stuff. That is also, I don't want any dependency on me. Because you yourself, we all are healers actually. खुद Yeah. heal कर सकते हो. सही We are बात है. just a medium. I don't even call myself a healer. We are just a medium. You're just given this work in Platform. your Yeah. hand, okay, by God. So you're just giving that light away to people and let it reach out to more and more people. So I always tell my clients saying that अगर आपने कुछ सीखा है, either with words, you don't have to be doing meditation or healing, but when you see something wrong or when someone comes to you as a guidance, see the way you speak to them. You'll not indulge in jealousy or gossip or anything of that sort. That's another beauty of spirituality. What happens is you will not be indulging any negative people, or you will not indulge in any of those gossips at all, because Right. you're so happy within yourself. You start feeling You very don't need that. complete with, you don't even need nobody. वैसे हो जाता है. You start feeling very complete within yourself, and Right. rest whoever is there, you're still sending them love. You're receiving and giving love equally to everybody around you. Okay, So Rihanna, we this have a very happens. interesting question, which is extremely funny as well, from Akash. He says, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, क्या करूं? That is, I have an answer to that, but I would like you to answer that. And Puneet also has a question, which is the opposite, and he says, मुझे रातों को सोया नहीं जाता. So, what do you have to say in this? See, what happens is when you people don't feel sleepy or they can't sleep,
because they have, one is they Yeah. have been doing that for a very long time. एक आदत बन जाती है. Body is like a, it follows a clock. Body is like a proper machine which actually has, इतने बजे मुझे भूख लगती है, इतने बजे मुझे सोना है. ये माइंडसेट फिक्स कर देते हो अपने दिमाग में. ठीक है. So now when you really want to shift, you really want to change, first thing what you do is you start writing it down. Writing is a very powerful tool which from subconscious comes to your pen onto the paper, and you start reading that every day and make small changes every single day. छोटा सा चेंज. जैसे मुझे फ्रूट्स खाना है हर दिन. ईट, सेट द टाइमर, डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू डू. अगर एक दिन किया भी नहीं, हो नहीं रहा है, अपने आप को ब्लेम भी मत करो. इट्स फाइन. गो स्लो. So when you really want to be awake or sleep early, right? It's about mindset shift from inside. It's never external. पहले अपने आप को बोलना है कि are you really ready? Stand in front of the mirror and say, I want to get better. I want to look better. I want to feel better. I want a disciplined life. When you say that, you're ready. Keep saying it. I'm ready to have a disciplined life. I'm ready to see. Even I was a late sleeper. आजकल मेरे से होता ही नहीं है. I sleep very early. I wake up at Rihanna was a 6:30. I'm very late sleeper. absolutely बहुत ज्यादा. आजकल तुम बोलो, मैं बोलूंगी नहीं, टाटा बाय बाय, आई वांट टू स्लीप. You know why? Because I have set my clock that way. I've set my mindset. It's Right. not about मैं बोलने से या तुम बोलने से वो change होगा. It's about you deciding it Your from mindset, inside, yes. saying that I am ready to change. You're True. really ready to change. You're seeking it. People सोचो have अभी this कोई mind. Sorry, go ahead. no, 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 that's it. You People please go have ahead. this mindset which is, like even Akash is saying over here in his question that मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता. That thing कि नहीं हो सकता. I cannot do You've it. already made up your mind. That's Exactly. another thing about switch words. तुम Yeah. कैसे अपने बारे में सोचते हो और अब क्या आप कैसे बोलते हो. लाइक फॉर Law of एग्जाम्पल आई कीप attraction. सेइंग लूजिंग वेट मैं कभी नहीं बोलती. आई ऑलवेज से शेडिंग वेट. Right. Losing is a negative word, so I don't want to Right. lose anything. I want to shed everything. Shed is more of a positive word. I will never say be careful, right? I will always say be safe. Be safe sounds better than be careful. I Yeah. will never do this. तो आपने अपना मन बना दिया है कि आई विल नेवर डू इट. यही बोलते जा रहे हो. So you always say, I am ready to do it. When you say I'm ready, you're actually preparing your mind and body, saying that I am ready to do it. जब तक वो थॉट नहीं आती है, कोई Mhm. फायदा नहीं है. कोई बहुत लोग जिम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, मैं करूंगी करूंगी, या न्यूट्रिशन प्लान के लिए भी आते हैं. बट आई नेवर एक्चुअली स्टार्ट विथ जस्ट गिविंग द प्लान. मेरा फर्स्ट सेशन होता है मेडिटेशन का न्यूट्रिशन प्लान में. This session, I talk about all this so that they are ready here, not just by eating. They are Mhm. literally ready in their mind, saying that I am ready for, this plan. I am ready to actually shed my weight. I tell them how to think, how to feel about their body, and how to see and how to eat your food with gratefulness, with joyous energy. Everything matters. So, पहला session वो होता है मेरा meditation का, या talking and all that. Talking is also healing. And Right. then middle में एक होता है after 15 days. Again, towards the end of the meal plan, I give another session. How to go future में कैसे रहना. So this is what I do extra when it comes to meal plan. Uh, which people normally, when you say nutritionist or yoga teacher, they are only concentrating on their body. सिर्फ body पे ध्यान दे रहा है. If you see lot of people, they're just concentrating only on their body. How about the mindset? How about the mindset shift? Right? ये बहुत जरूरी है. Without that, मुश्किल है. Everything is a decision you make. अगर आज आप सोच रहे हैं आप नॉनवेज छोड़ दोगे, that is a decision you have made. How to Right. stick to it, yeah, गया. That minute it is gone because you're questioning yourself. You're still in doubt. Right. Hi, Antrik Badlav. Hi, Poonam. Hello. Thank you for coming on.
We are having a conversation with my very dear friend Rihanna. She is a nutritionist and a spiritual healer. Uh, okay, Yes. I had I a hope I've question. answered your question, Puneet and Akash. मैं सीरियसली आंसर Dipanshu, दिया हूँ. hello, नो English इंग्लिश. people. यार Okay, ट्राई करेंगे हिंदी में बात करने की बट no, we बीच बीच will में. have both. Yeah, we will be having both English, Hindi, both. Um, राइट. I had a question in my mind, it just slipped off. Never mind. I wanted to also ask you, Rihanna. There are people who say that उसने करा ऐसे, उसके वजह से हुआ. मैं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ऐसे करा था मेरे को, तो मेरे साथ ऐसे हुआ. Do you have anything to say about this? Absolutely. So this is another vibration called blame energy. वो सबसे नीचे आता है. ब्लेमिंग सबसे नीचे नहीं, मीडियम. ओके 30 या 40 ऐसे वाइब्रेशन में होती है. तो जिंदगी में क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम पीपल नॉर्मली. Yeah, ओके इट्स वेरी वेरी इजी टू एक्चुअली ब्लेम पीपल, सेइंग दैट उसने किया, इसने किया, इसने किया. लेकिन तब भी मैं जो इनर वर्क की बात कर रही थी, इट इज अबाउट मिरर. समवेयर यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ. right. व्हेन यू एक्चुअली क्लियर आउट दैट इमोशन, एवरीथिंग इज इमोशन. उसीलिए ये सारा चीज आपके सामने आता है. व्हेन Go यू into स्टार्ट. detail about this, Rihanna. When you say you're blaming yourself, you know, when you point out the finger on others, they say, right, when you point it out on others, the three fingers are at you. But what do you really mean about that? Do you mean that every emotion that you have is an emotion which you carry from within of your past and of what यस. you are facing? यस. Okay. एब्सोल्युटली, आई Go टेल यू, in आई गिव यू detail एन about it. एग्जांपल. लेट्स गो बैक टू दिस सेम ब्लेम का Right. एग्जांपल लेते हैं. यार ये ऐसे ही करता है, ये मुझे इग्नोर करते रहता है, रिस्पेक्ट ही नहीं करता, ये ऐसा ही है. व्हाट डज दैट मीन? यू, तो वो फिंगर को यू से आई को लेके आओ. ठीक है. गो गो बैक विद इन, क्लोज योर आईज, फील, गो टू योर हार्ट, सेंटर, एंड फील दैट एनर्जी इनसाइड यू. आपको किसने डिसरिस्पेक्ट किया है, या आपने खुद को कहाँ कहाँ कौन कौन सा सिचुएशन में डिसरिस्पेक्ट खुद को किया, where you have not given that value to yourself, where have you blamed yourself in your life. ये सारा कुछ आपको फ्लैशेस आएंगे. जैसे बचपन में, हाँ, सोचो मेरे दीदी ने मुझे बहुत ब्लेम कर दिया. मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे दीदी ने मुझे ब्लेम कर दिया. ये बच्चा क्या किया, उसको लग रहा है कि मैंने ही किया है. आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम ब्लेमिंग से माई सेल्फ. बिठा लिया वो मेरे, चीज. हाँ, मेरे वजह से हुआ है. तो एज यू ग्रो अप, जैसे आप बड़े होते जाते हैं, क्या होता है पता है, यू स्टार्ट बिलीविंग कि यही है. तो इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिगर एट अदर पीपल. वो ब्लेमिंग एनर्जी आपको बार बार आती जाएंगे. इतने सारे लोग आपको ब्लेम करते जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा मान लिया है कि मेरे वजह से ही हो रहा है. वो आपको पता नहीं चलेगा. इट्स अ वेरी सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम. It's a very interesting factor when you actually do the mirror work or when you go deep within. क्या होता है पता है, ये सारा कुछ बदलते रहता है. You have seen it yourself when you have Yeah, started doing this mirror work, how things have shifted, how relationship changed. Even in my life, true. जिससे मैं मिलना भी नहीं चाहती थी, मैं डरती थी, उससे आज मैं बहुत खुशी खुशी मिलती हूँ. Yeah. कैसे? क्योंकि मैंने वो वाला फीलिंग जो अपने अंदर है, अपने बारे में कैसे मैं सोचती हूँ, जब वो निकल गया, Mm. बहुत आसान है. I think you then end up attracting people of, what you feel is what you attract, right? So if you feel good, you attract good people around you. If you are negative, then you will attract negative around you. That's how it ये क्यों works, होता right? है पता है? यस, ये क्यों होता है पता है? हमारा बॉडी, एक होता है फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी. तुम्हारा ऑरा सब कॉजल बॉडी है, वो तो हायर है. बाकी मेन जो बॉडीज रहता है, तो आप जो ऑरा कैरी करते हैं, ठीक है, उसके ऑरा माने क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं, दैट इज योर ऑरा बेसिकली. ठीक है. तो अगर ऐसा है, जैसे आप फील करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं,
वही आपको दिखाई देगा सबके साथ, एवरीबॉडी। से फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। एक रूम में 4-5 जन बैठे हुए हैं, ठीक है, 4-5 जन बैठे हुए हैं, और उनमें सारे बहुत खुशी खुशी दे आर जस्ट टॉकिंग एंड हैविंग लॉट ऑफ फन, ठीक है, वो सारा कुछ हो रहा है। सडनली अ पॉजिटिव माइंडसेट का एक बंदा वॉक इन करता है, ठीक है, तो वो माहौल क्या होगा? वेरी फनी गाय ही कम्स, इट बिकम्स डबल हैप्पीनेस बिकॉज दैट गाय इज कैरिंग अ ऑरा ऑफ हैप्पीनेस, स्प्रेडिंग लव। Right. वही थोड़ी देर के बाद एक बंदा आता है, बहुत नेगेटिव है, बहुत वेरी अनॉयड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद हिमसेल्फ, उसका कुछ भी सही नहीं चल रहा, वो वॉक इन करता है। उस रूम का ऑरा क्या होगा तब? क्या होगा? पूरा नीचे चला जाएगा, Yeah. बिकॉज यू And ऑब्जर्व I दैट। think you feel that too. You know, you when somebody negative enters, in fact, even in your house in general, or you go to somebody's house where there's always fighting happening, you don't feel good in that place. You just feel Not at very all. needy. So you understand that is your that is the aura what people are radiating, and you're absorbing that. We are like sponges. हम लोग absorb करते हैं एनर्जी को, सो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर दिमाग स्ट्रॉन्ग कर दिया, अलाइन कर दिया। इसीलिए मेडिटेशन वगैरह बोलते हैं करो, ताकि आप अपने आप में इतने मजबूत बनते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, आजू Okay, बाजू में क्या हो रहा है। there are a lot of messages that have come, but I think there is Infinite Explorer Akash is asking, कान पैर दो सीधा बात खत्म रिस्पेक्ट ना करे तो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स बट ओके रेस्पेक्ट नहीं करे तो देन वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर दैट पर्सन, इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, आई थिंक सो। ओके ओके या, नो, ओके आई मीन टिट फॉर टैट नहीं होता है, रिवेंज इज ऑल्सो एन एनर्जी। तुम रिवेंज करके करोगे क्या? खुद के अंदर खुद का एनर्जी खराब करोगे। ट्रू Forgiveness is a better deal because you are enriching your soul again. जब आप वो रिवेंज रखते हो अपने अंदर, वो अपने अंदर डिजीज के फॉर्म में आता है। You या start feeling heartburn, you will start feeling stomach issues, because every disease in your body is also related to the kind of emotions you keep. वो ट्रैप हो जाता है, which we talk about chakras, right? वो 7 चक्रा मेन है, there are some 114 chakras in your body, 7 मेन है, तो इसमें ट्रैप हो जाता है। दिस एनर्जी हैज टू कीप मूविंग, लेकिन ये इमोशंस ऐसे स्टक करके आप क्या करते हो? वो एनर्जी मूवमेंट वहां पे ट्रैप हो जाती है। आई थिंक दैट्स दैट व्हाई इज डिजीजेस एंड अप कमिंग राइट या, एलिमेंट्स इसीलिए होता है। राइट Okay. And how can you make it all right is again by meditation, unblocking that chakra, balancing that chakra, or eating right kind of food. Or nahi, along with that, these are all factors. सारा राइट कुछ जैसे योगा फिजिकल लेवल पे, अच्छा खाना फिजिकल लेवल पे, माइंडसेट अच्छा थॉट से, मेडिटेशन इज फॉर योर सोल। सोचो आप सब कुछ कर रहे हैं, कितने बैलेंस में रहोगे आप? दैट इज व्हाई वी कीप सेइंग प्लीज डू मेडिटेशन। एंड फूड, हाउ डज इट इम्पैक्ट फूड? से फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉट ऑफ पीपल, आई मीन कोई भी चक्रा ब्लॉक हो सकता है, सबसे ज्यादा ब्लॉक होता है हार्ट चक्रा, क्योंकि किसी ने दिल दुखा दिया, ये ब्लॉक कर देते हैं। उसको खोलना, से वन पर्सन इज इन अ रिलेशनशिप, ओके, कोई रिलेशनशिप में है, वो बंदे का ब्रेकअप हो गया, या किसी ने राइट दिल तोड़ दिया, इमीडिएटली क्या होगा उसका हालत? either they will go into addiction, या they will start feeling very stable, नींद, उसको बैलेंस करना कैसे पता ही नहीं है, बिकॉज दे हैव गिवन देयर माइंड बॉडी एंड सोल टू द अदर पर्सन। उसने ये नहीं सोचा कि खुद को प्यार देना है पहले। ऑन हार्ट ना, तब क्या होता है, वो हील होने में टाइम लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग क्या होता है, जब दूसरे बंदे आपकी जिंदगी में आते हैं, कोई नया पर्सन, यू विल नॉट ओपन वेरी इजीली, क्योंकि आपका पास्ट बैगेज आप कैरी कर रहे हो, ये राइट ऐसा ही होगा। just hold your एंड thought Jana I'm sorry Bushra hi Bushra welcome back to my live we are basically having a
a lovely guest on. She's a very dear friend of mine. This is all about spirituality. You are too young for it, but it'll be nice for you to hear some really interesting things. Never young, yeah, babe. I Never know. young. She's Bushra is, I think, 11 or 12 years old, and she's just had a baby brother, so she's taking full How enjoyment sweet. of the little one. Mm-hmm. And Jax, hello, Jax. Welcome to my channel. Thank you for coming on. Okay, so we will, but Rihanna, we must also look into how we can impact meditation into children's life. How it can change children mindset about their studies, about bullying, about things around them that is going on in today's world, which is not really nice. First thing, what happens with children is right now the world is moving uh, in times where there is so much of social content out there, which is a lot of violence and stuff. They end up watching it. They end up watching they're absorbing lot of content. So So, as a parent, if you can actually pull out that टाइम विद द चाइल्ड क्या करते हैं ना लोग मोबाइल दे देते हैं पकड़ा देते हैं चलो यार आई मीन वी नीड अ ब्रेक नाउ वी हैव वर्क टू मच now that is something during that time even half an hour or 1 hour of your time in one day with your child sit down okay and talk indulge in beautiful drawing sketching together these are all meditations only उसको नेचर में लेके जाओ it right, grounds you and show them content which are positive, motivational speeches and things like that. Start putting those things in your child's head. I had told my daughter to watch what's that? I forgot the channel. Uh, Even I think Ariana also watches that. Peppa Pig. No. Okay, Uh, it's those short videos which are very motivating with moral in it actually. I can't remember the show, okay, but okay, okay. So you can actually introduce them to those shows which has moral in it. माने उनको समझ आएगी where they can deal with life situation in reality, today's right. reality. कैसे सोचना है, क्या करना है, you know, and also you could also led them towards prayers. That's another thing, which Right. brings focus. Will Yeah. they will have some ground माने उसको clarity मिल जाएगा कि ये direction में जाना है, you Mm-hmm. know. And Yeah. meditation, yes, if some kid is agreeing to it, then there are a lot of channels which do kids के लिए meditation, where they Yeah. visualize rainbows and I butterflies have and things like Ariana to that. do that. I think it's a very Right. beautiful thing. You know what happens, they don't realize it, but अंदर क्या चलता है पता है उसके वजह से they start believing in miracles and magic, A, and second thing, they feel they can do anything and everything in life Right. because that Right. becomes their world. And three, it allows them to focus करना बहुत अच्छे से आएगा उसको Mm-hmm. because you're concentrating, you're teaching the child to concentrate. And visualization is powerful. They can become story writers in the future. They can actually create things. Their creativity level goes up due to these meditation. Agar, Sorry, like I said, you continue talking. Just give me a moment. I'll be back. Yeah. Continue the conversation. right. So, so as children, the focus also increases very much. इतनी ज्यादा फोकस बढ़ जाती है कि बच्चा ना बचपन से ही बहुत क्रिएटिव होता है दे स्टार्ट इन्वेंटिंग स्टफ देर आर सम किड्स हु बिकम यू नो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं बहुत बचपन से ही एंड दीज आर द काइंड ऑफ पीपल उनका फोकस बहुत बढ़िया रहता है और दूसरी बात उनका पेरेंट उसके साथ दिया होता है पेरेंट्स उसको बच्चों के साथ अगर उसमें से फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को खेलना पसंद है तो उसको आप उसी डायरेक्शन में पुश करते हो कि ये आपके लिए अच्छा है एंड यू स्टार्ट गिविंग देम दैट लव तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चा को लगता है सपोर्ट भी है उसका पेरेंट का सपोर्ट सब कुछ होता है एंड यू आर गिविंग देम लॉट ऑफ लव प्यार से कुछ भी हासिल कर सकते हैं गुस्से से नहीं जेलसी से नहीं वो सारा कुछ आपको भी गिरा देगा इमोशनली और बच्चे को भी गिरा देगा तो बात यही है
Is there anybody? ठीक है पुनीत भाई। ओके, सवाल मेरे बेटे के लिए है, वो भी बहुत छोटा है, पर वो हर बात दिल पे लेता है। आंतरिक बदलाव। ओके, सो आपका सवाल है कि आपके बेटे बहुत जल्दी हार्ट में ले लेता है। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू एज अ पेरेंट। ओके, आप पेरेंट है, जब आपके बच्चे से आप बात करेंगे ना, उसको स्ट्रेंथ वाली चीजें दिखाओ। जैसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, वैसे वैसे चीजें आपको दिखाना पड़ेगा। इवन आप बोल सकते हैं, अगर वो समझ नहीं आ रहा है, आप वैसे वीडियोस दिखा सकते हैं जहाँ यू नो कैसे बच्चे अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस, या कोई वीडियो में ऐसा है कि बहुत बच्चा है एक साथ में, एंड कोई और बच्चा है जो उनको बुल्ली कर रहा है। ठीक है, और वो बच्चा उसको कैसे संभालते हैं। ओके, हाँ, आप ये दरमन की एक वीडियो है, उनको आप वही मैं पहले सोच रही थी, दरमन करके वीडियोस है, उसको दिखा सकते हैं। अगर बहुत छोटा है अब मत दिखाओ। ओके, लेकिन वैसे वैसे वीडियोस दिखाओ, उसको बोलो कैसे स्ट्रांग बनते हैं इस दुनिया में। ये बहुत बताना। मेन थिंग इज, अपने बच्चे से ना जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, जो आप दिखाएंगे वही वो सीखेंगे। ओके, वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। क्या आप या आपकी वाइफ, फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसे वीक है, कोई इमोशनली जब कुछ बोल देते हैं बहुत जल्दी दुखी हो जाता है या दुख पहुंचता है, अगर वैसे कुछ है घर पे, वो नोटिस करो, तो बच्चा वही अब्सॉर्ब करता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो बच्चा देखते हैं आजू बाजू में, स्कूल में हो गया या घर पे हो गया, वो सीखते हैं। उसी हिसाब से वो बच्चे भी ना वही चीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आंतरिक। अ, हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसका आंसर है कलरी किड्स। मेरी दो बेटी है। ओके, हाँ पूनम जी, वो बढ़िया है। आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जरूर मैं भी ले लूंगी वो। ओके, सॉरी गाइस, माय हिंदी इजंट दैट ग्रेट। ओके, सो पुनीत जी, आई विल टेल यू, आपका माइंड को कैसे कंट्रोल करता है, मैं अब बताती हूँ। सोचो आप कुछ करने वाले हैं, या आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे यूट्यूब करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन आपका माइंड बार बार बोल रहा है कैसे होगा, क्या होगा, डर लग रहा है, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सारा कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, है ना। जब वो दिमाग में वैसे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज, उसको नेक्स्ट थॉट में लेके नहीं जाना है। वही के वही, वही के वही आप उठ जाओ, लोकेशन बदलो, चलो, घूमो बाहर, खुला घूमो, और फिर बैठ जाओ। यू कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 4 बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके बोलो, कुछ नहीं। माइंड, माइंड से ही, जैसे आप एक और आदमी से बात कर रहे हैं, वैसे अपने माइंड से बात करो, सेइंग दैट, सुनो, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। ओके, मुझे आपके साथ चाहिए। ये थोड़ा अजीब लगेगा पहले, अपने अपने अम, अ, अपने आप से बात करना, लेकिन सच में जब आप अपने माइंड से आप बात करना शुरू कर देंगे ना, वो माइंड शांत हो जाता है, उसको आंसर की जरूरत पड़ती है। वो बोलते रहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया माइंड को, है ना, तब वो माइंड शांत हो जाती है, आपका सोल एनहांस हो जाता है। बात यही है। दिस इज व्हाट हैपेंस। Rihanna, ओके, तो माइंड, I'm glad you're सॉरी आई answering the. वाज आंसरिंग। Please go ahead. यस Please go यस ahead. यस। I'll just be coming back in like 5 minutes. Also, once you're done with the questions, please also talk about the alignment of nutrition with spirituality, and why are they this goes hand to hand. Okay, please do talk राइट about it, राइट। and I'll be back. Yeah. नहीं नहीं, तुम आ जाओ, उसके बाद बात करूंगी। Until then I will just speak to Okay. whoever Okay. Cool. is better. Yeah.
ऑल राइट, क्या बोल रहे थे पुनीत भाई? ओके, आई डोंट नो हु इज टॉकिंग। आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। सच में माइंड को एक्चुअली अपने काबू करना और सोल को एनहांस करना एक्चुअल में बड़ी बात नहीं है। जब आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तभी के तभी आप स्विच करके बोलो नहीं, अब मेरे सुनो, मैं बोल रही हूँ ये सोच गलत है। मुझे पता है अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब आप ऐसे बात करोगे ना, आप देखो माइंडसेट कैसे शिफ्ट हो जाए। ये बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना है ना, तब भी आप ये यूज कर सकते हो। और एक चीज है, फियर, डर से अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ओके, वो सही नहीं होगा। पहले बोलो मैं डरती नहीं हूँ, आई डोंट आई डोंट गेट स्केर्ड, आई एम वेरी ब्रेव, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये थॉट अगर आप हर दिन बोलते जाओगे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और कोई एज का टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और डर, क्या माउंटेन ड्यू का एड है, डर के आगे जीत है, और सच है। आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। किससे डर रहे हो? इंसान से, या सिचुएशन से, या कुछ और से? क्यों डर रहे हो? इसका मतलब ही नहीं बनता है। ये डर ही एक वजह है जो लोग ना बैठ जाते हैं कुछ करने से या कुछ बोलने से। बोल के तो देखो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे सोचने लग जाएंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट विद इन माई सेल्फ एंड आई डू बिलीव इन माई सेल्फ टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आप मैजिक देखो। और जब भी नेगेटिविटी से दूर ही रहो, नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन। और जब आप ऐसे करने जाएंगे, करते करते करते, आप देखो आपका जिंदगी बहुत सुकून भरा होगा, बहुत सुकून। और आपको ऐसे लोग भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका वाइब्रेशन अलग हो गया है, आपका एनर्जी लेवल अलग हो गया है। और कोई आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है उसके बाद। जैसे आप सोचते हो, वैसे ही आपका रियलिटी बनते जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं सोच सब कुछ है। और किसी और के बारे में गॉसिप करना, वो पहला चीज छोड़ना ही छोड़ना है। सबको प्यार भेजो, कोई भी चाहे कोई भी हो, सबको प्यार भेजो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। ओके, डियर, आई एम अ लिटिल फेस रीडर। पूनम जी, हाँ बढ़िया है, यूटिलाइज करो उसको। अगर फेस रीडिंग है, अगर आपको ये गिफ्ट मिला है, आप दूसरों यूटिलाइज करो अपने लिए, और दूसरों को भी सिखा सकते हैं आप। ये बहुत बढ़िया होगा। जो भी आपको दिया गया है, कोई भी आपका हुनर है अपने अंदर, प्लीज स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड। कभी भी ना, अगर आपके पास कुछ भी है ना, बांटना सीखो। जब आप बांटेंगे, व्हेन यू गिव, यू रिसीव डबल। ये सच बात है। कभी भी स्टिंजी माइंडसेट से मत सोचो। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक चीज मैं बताना चाहती हूँ सबको, जो भी यहाँ पे है या जो भी देखेंगे बाद में। जब भी आप पैसे खर्च करते हो, जब भी आप पैसे खर्च करते हो, हमेशा बोलो थैंक यू फॉर द प्रेजेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ। इसका मतलब मेरे पास है, इसीलिए मैं दे पा रहा हूँ। हमेशा उसको प्यार दे दो, पैसों को देते वक्त। जब आप रिसीव करते हो, माने जब पैसे आते हैं आपके पास, आपको क्या बोलना है? थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी इनटू माय लाइफ। ये आपके पास आ रहा है। और जब भी आप देंगे ना, बहुत खुश, सेम एनर्जी से, खुशी से आप देंगे, वो खुशी से लौट आएंगे। अगर आप देते वक्त सोचेंगे यार देना पड़ेगा, क्या करूं?" वो आते वक्त भी वैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा। सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ। जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप अम, चीजों को कैसे वैल्यू करते हैं, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। आई होप आई हैव हेल्प्ड समबडी हियर। और कुछ क्वेश्चंस है किसी को पूछने का? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। क्या है? सुना बेबी मनी। Okay, I don't know what it means. Same, same, but different. No money, no honey.
आप जैसे आप माइंड से जो भी आप ऑब्जॉर्व करेंगे, सोचो 1000 लोग 1000 चीजें बोलेंगे। सोसाइटी में बोलते हैं कि पैसे नहीं है तो आपके पास अच्छा पार्टनर नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। सच्चा प्यार भी होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप वैसे उस थॉट में जाना ही नहीं है। आप हमेशा सोचो कि पैसे बहुत है, आएंगे ही आएंगे, मेरे पास बहुत है। अगर आप विश्वास करते हैं वैसे, जरूर आएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर विश्वास करते हैं कि नहीं आएंगे, तो सच में आके भी वो चला जाएगा अपने आप से। फिर मैं खुद दिल से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मूवी देख रही हूँ, मेरे आसपास कोई देखते हो तो मुझे वो नहीं देखा जाता, मुझे एकदम से रोना आ जाता है। से मेरे पेट है। सी, आंतरिक, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो बच्चा देखता है ना, वही वो ऐसे ही रिएक्शन देता है। तो आप अपने आप को बोलो, और क्यों रोते हैं, वो अपने आप में अंदर झांको कि आपके पापा मम्मी कैसे थे। कोई भी इमोशनल बहुत ज्यादा थे। ये एक बोलते हैं ना एंसेस्ट्रल लाइन, माने आप कैरी करते हैं ये जनरेशंस के साथ। आप तोड़ सकते हैं इसको, जस्ट बाय सेइंग, टेलिंग योर माइंड कि आई एम स्ट्रांग इनफ एंड आई बैलेंस माई इमोशंस। आई बैलेंस माई इमोशंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप बात करते हैं। मैं अपने आप को बहुत बैलेंस में चलती हूँ, ना ओवर इमोशनल, ना अंडर इमोशनल। माने बिल्कुल ही इमोशन नहीं होना, वो भी खराब है। बहुत ज्यादा इमोशंस भरना, वो भी खराब है। तो इसके लिए बैलेंस, आई चूज टू हैव बैलेंस्ड इमोशन, ये बोलना जरूरी है। जब आप वैसे बन जाएंगे, आप देखो आपका बच्चा भी ना वही ग्रास्प करेंगे। ओके। जिंदगी में दोनों बहुत जरूरी है। हमारे अंदर मैस्कुलिन साइड भी होता है, फेमिनिन साइड भी होता है। दोनों बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है, सोसाइटी ने बोल दिया कि लड़के रो नहीं सकते। ये ये सच नहीं है। ओके। लड़के भी वल्नरेबल होता है, लड़कियां भी वल्नरेबल होती है। लड़की भी लॉजिकल हो सकती है, लड़का भी लॉजिकल हो सकता है। ये दोनों बैलेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों बैलेंस में रहेंगे, ओके, सोचो हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों बैलेंस्ड है, तो कितनी बहुत अच्छी माहौल बनेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बंदा हमेशा इमोशनल है और दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं दोनों को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर लड़का किचन में काम कर रहा है, तो सोसाइटी बोलेंगे नहीं 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 करना है, क्योंकि वो सिखाया गया है। बट ये रूल किसने बनाया? ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों साथ में रहो, मिलके काम करो। मैं न्यूट्रिशन में भी बोलती हूँ, इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द फोन, वीकेंड पे अगर दोनों काम कर रहे हैं, वीकेंड पे अगर दोनों प्यार से कुकिंग करेंगे, कितना अच्छा होगा। वो आपका फैमिली का वो जो वैल्यू भी बढ़ता है, और आप दोनों कुछ ट्रायल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन खुद बनाया, तो कितना प्यार बढ़ेगा। लेकिन सोसाइटी ने बरसों से, सदियों से बोला जाता है कि नहीं नहीं, लड़के को किचन में घुसना ही नहीं है। तो अभी चेंज का टाइम है, शिफ्ट का टाइम है ना? तो वो गूगल करके सरदार, आई डोंट नो। ओके। ओके। थैंक्स फॉर द एडवाइस, करूंगी विश्वास खुद में। यस प्लीज। हाउ कैन वी शो आवर इनर लव सपोर्ट टू योर लाइफ? ओके। कैन वी शो आवर इनर लव एंड सपोर्ट टू योर लाइफ, लव वाइफ? हाँ जी। बाय बीइंग एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव अगर एक्चुअल में किसी को प्यार दिखाना माने ना, पहले खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है पुनीत। मैं हमेशा ये बोलती हूँ। आप इमेजिन करो, ये एक्सरसाइज अभी खुद, अभी 2 मिनट में आप कर सकते हैं। आप क्लोज योर आइज करके सोचो, आपके अंदर एक कप है, ठीक है? उस कप में ना आप प्यार भरते जा रहा है, भरते जा रहे हैं खुद के लिए। ओके। जब खुद के लिए भरते जाएंगे, इट्स वेरी इजी टू गिव लव, क्योंकि आपको आपको खुद के लिए प्यार है। ओके, तो वेरी इजी टू गिव लव दैट टाइम। सोचो, आपका कप एम्प्टी है, बिल्कुल ही खाली है, या इतना ही रिजर्व बचा है। तब आप प्यार देने जाओगे ना, आप खुद ड्रेन होते जाओगे। आप इतना ड्रेन होंगे
कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए। ये बंदा क्यों नहीं समझ रहा है? क्यों समझ नहीं रहा है? वो मिरर कर रहा है आपको कि आप खुद के अंदर झाँको, आप खुद को प्यार करो। आपकी ज़िंदगी में आप सब कुछ सही कर रहे हैं? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंडसेट? आर यू टेकिंग केयर ऑफ खाना? या आर यू टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग लाइक फैमिली लाइफ? आर यू गिविंग दैट मच टाइम टू योर वाइफ एंड फॉर योरसेल्फ? आप ये सारा कुछ देखो। अगर आप वो सब सही कर रहे हैं, तो आपको वैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतना। वो खुद ब खुद प्यार आएगा भी, आप देते भी रहेंगे। मैं थोड़ा रूड हो गई हूँ यहाँ पे शायद, लेकिन ये सच है। खुद को प्यार देना सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद ही आप किसी और को दे सकते हैं, नहीं तो आप ड्रेन हो जाओगे। No, एक Dipanshu बैलेंस के लिए Bushra is not Indian. सॉरी? Sorry, continue. Well, Dipanshu was asking whether Bushra is Indian, so I said she's not Indian, she's German. ऑलराइट। सो you Awesome. understand? Yeah. So I think I was just talking about money. I spoke about relationship. पता नहीं जो भी questions आए I मैं was इसके answering सारे from the other room because I just had to take care of my son. He was crying. That's the reason I rushed. But this is right. amazing, Rihanna. I would like you to just probably the topic that we had mainly come here for. Just give a little gist of it, and how did you understand the link up of nutrition and spirituality, and then we will kind of close it Wind here. up. Yeah, we'll wind up Right. and we will come again for our next topic very soon. 200%. So पहले जान लेते हैं खाना क्या है। खाना एक एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है। खाना भी एनर्जी है। जो आप खाते हैं, आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। आपको जंक खाना क्यों पसंद होता है पता है? जब ब्रेकअप होती है जंक क्यों खाते हैं? हाँ, सोचो, सोच के देखो क्यों खाते हैं? यू डोंट वांट टू ईट समथिंग गुड क्योंकि अपने आप को बर्बाद करने में तुले होते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं। व्हाई इज दैट? द रीजन इज इमोशंस आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड विद फूड। आप क्या खाना खाते हो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू लव योरसेल्फ। आप अच्छा खाना तब खाएंगे जब व्हेन यू आर वरीड अबाउट, वरीड नहीं बोलूंगी, व्हेन यू आर एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। तुम्हारा बॉडी अच्छा दिखना चाहिए। आई वांट टू लुक गुड, आई वांट टू फील गुड, और मुझे पता है ये खाने से मेरे लिए अच्छा है और ये पीने से मेरे लिए बर्बादी है। ये माइंडसेट ही है ना। तो खाना इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर माइंडसेट एंड हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। तब मुझे सच में समझ आई, कोई डाइट प्लान ऐसे करा नहीं सकते किसी से जब तक वो अंदर से वो महसूस ना करे कि मैं बहुत बर्बादी की ओर चली गई हूँ, अब मुझे अच्छा बनना है। तब जाके इंसान उठ के आएगा, तब तक नहीं आएंगे। लेकिन जब वो आते हैं, वो शिफ्ट करना वो हमारे हाथ में है। हम लोग करवाते हैं कि आप अपने बारे में अपने आप को देखो, मिरर के सामने खड़े होके बोलो। खुद से आई लव यू बोलना कितना मुश्किल होता है पता है पहले। दूसरों को प्यार भर भर के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू गिव लव टू अदर्स, बट खुद को एक मिरर के सामने खड़े होके आई लव यू बोलना, हंसी आती है पहली बात तो। ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज होती है। आपका सब कुछ दिख जाती है, आपकी बुराई, आपने क्या क्या गलतियां की है, सब सामने आ जाता है चेहरे में। लेकिन उसके बावजूद क्या आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं? जब आप वैसे प्यार कर सकते हैं जैसे आप है, तब देखो दूसरे बंदे भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। और खाने के बारे में बताती हूँ। सोचो आप खाना खाने बैठे हैं, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट डाउन एंड ईट। यू नो व्हाई? देयर इज अ रीजन, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। इज बिकॉज व्हेन यू स्टैंड एंड ईट, या घूमते घूमते जो डाइजेशन प्रोसेस होता है अपने स्टमक में, वो सही से हो नहीं पाती है। बट व्हेन यू सिट डाउन, ईट स्लोली, चू स्लोली, ये ब्रेक डाउन, ओके, आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकलिटी, बट ये जो बोल सोचो कि डाइजेशन बहुत सही से होता है। जब पानी भी पीते हैं, बोलते हैं राइट हैंड में पियो, या सिप सिप करके पियो। ये सब अंधविश्वास नहीं है।
हमारा बॉडी मैकेनिज्म ऐसे बनाया गया है कि इतना टाइम आपको चाहिए। ऐसे बैठ के अच्छा सोच के खाओगे तो आपका शरीर बहुत अच्छा बनेगा। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो व्हेन यू सिट डाउन एंड ईट, आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स, एक चीज मैं बताती हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रेयर। ये रिलीजियस में है यार, क्यों प्रे करना है, बट एक्चुअल में क्या कर रहे हो तुम उस खाने को ना अच्छा एनर्जी दे रहे हो। Right. Absolutely. और लोग ना एक्चुअली रिलीजन में जब करने के लिए बोलते हैं ना, बोले क्यों करूं यार, बच्चे भी बिड़ जाते हैं क्यों करूं, बट एक्चुअल में उसको अलग तरीके से समझाएंगे कि आप क्यों प्रे कर रहे हो। पता है, खाना स्वादिष्ट बनता है, बहुत खुशी से खाओगे, बहुत खुशी खुशी डाइजेशन होगा। अगर आप गुस्से से करेंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो माइंडसेट कैसे इंटरलिंक्ड है। और खाना इज अ फ्यूल फॉर योर बॉडी। आपका एक फ्यूल होता है खाना, ये बहुत जरूरी होता है अपने चलाने के लिए। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे खाना हमारे बॉडी के लिए चाहिए। अगर वो गाड़ी में पेट्रोल की जगह आपने डीजल डाल दी तो वो सही से चल पाएगा, नहीं चलेगा। सेम वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू ईट गुड फूड। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट वी डू वो मैं बताती हूँ। जैसे हमारा काउंटिंग होता है, बहुत मैथमेटिक्स होता है। मैं पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी, आफ्टर मेडिटेशन नाउ मैथमेटिक्स इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ओके। तो ये कैलकुलेशन होती है, ये कैलकुलेशन करके हम लोग पूरा देखते हैं आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके आपका कितना कैलोरी होना चाहिए हर दिन में, वो काउंट करते हैं हम लोग। उसके हिसाब से हम लोग डाइट प्लान बना के आपको देते हैं। तो आप वही फॉलो करोगे, एक्चुअल में बिना एक्सरसाइज का भी यू विल शेड वेट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि मैं अपना क्लाइंट को सिर्फ शेड करने के लिए मैं नहीं देती हूँ न्यूट्रिशन, मैं उसका माइंडसेट भी बदल पाती हूँ। वही मैं एक्स्ट्रा देती हूँ। मेरा वो फोटे है कि मैं उनको लाइफ लॉन्ग चेंज के लिए मैं आई गिव देम मोटिवेशन फॉर लाइफ लॉन्ग चेंज। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी, सिर्फ शादी के लिए जाना है इसीलिए मुझे अच्छा दिखना है, नो। Lifelong, how to feel and think and feel good about yourself at body, mind and soul level. और एक चीज है जो चक्रा में, हर एक चक्रा के लिए एक एक खाना अच्छा होता है। जैसे थ्रोट चक्रा के लिए हनी अच्छा है, ओके, या जिंजर अच्छा, हार्ट के लिए सारे ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स वो अच्छा होता है। तो वैसे भी अलग अलग चक्र अगर आपको स्ट्रेंथन करना है, फूड इज ऑल्सो रिलेटेड। योगा में भी है, जैसे योगा कर रहे होते हैं आप, एक एक चक्र के लिए अलग अलग पोजेस होता है वो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो ये सारा कुछ है। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फूड, प्लीज यू कैन आस्क मी। हेलो गाइस, या Padmini, I don't Yeah. think so they have any more questions. You can tell me. Just a moment. Give me 1 second. Sorry. You can turn off the camera if you want. Yeah. I'm not able to do it here. Yeah. One That's second. okay. Padmini, Yeah. should we wind up? Yeah. I think we should. We will. Thank you so much, Rihanna. I'm sorry for the interruption, कोई but बात नहीं, thank you so you much being a for great coming mother, on. first of all. And we will definitely do another round of something which is going to be more of visualization and how to go about that in our next episode. Anyone, whoever would have any questions, एप्पल को छोटे टुकड़े को कितने बार चबाना होता है? एक्चुअली जो भी खाना आप बहुत आराम से खाएंगे, इन योर माउथ देर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, डाइजेशन के लिए यहाँ पे भी शुरू होता है। ओके, तो 32 टाइम्स जो बोलते हैं वो सच है। ठीक है, जो चबाना होता है वो चबाते रहो। ठीक है, जो बोलते रहते हैं, हाँ 32 बार, पूनम जी, या करेक्ट,
वो क्यों बोलते हैं पता है? अपना मुंह में भी देयर इज एंजाइम्स, जो जब आप इतना ज्यादा व्हेन यू स्टार्ट चूइंग, यहाँ पे भी डाइजेशन होती है। उसके बाद जब पेट में जाता, पेट को थोड़ा कम वर्क होता है, काम थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं अच्छे से चबाओ। और एक चीज बताती हूँ, जितना आप यू चू अ लॉट मोर टाइम, आपका वेट लॉस में भी मदद होती है, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट्स पूरा ले रहे हो। जो जितना बचाना नहीं चाहिए वो बॉडी से निकल जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये भी पुराने जमाने में बोला गया कि 32 टाइम्स चू करो, लेकिन अभी साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंशन किया है, उसके बारे में समझ में आ गया है कि हाँ ये सच है, ये इसके लिए ही है। ठीक है। ओके, आई थिंक यू प्लीज कैरी ऑन पद्मिनी, इट वाज रियली नाइस ऑफ यू It टू was इनवाइट मी। absolutely wonderful. Thank you so much, Rihanna, for taking out time. I know you've been busy lately. जी, And we will plan this again very soon. Thank you, everybody, for coming and for your questions and having a interactive session. All right. Poonamji says, मेरा चेन्नई भी मोटिवेशन वेट लॉस का ही है मेरा चैनल वेरी अच्छा नाइस पूनम जी। वेरी नाइस दैट्स ओके, रियली ओके। नाइस ओह! वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज़ कीप डूइंग द गुड वर्क। ये बहुत ज़रूरी है ये स्प्रेड करना, ताकि लोगों को समझ में आए इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बॉडी। ये माइंड लेवल पे फोकस करना है, सोल को एनरिच करना है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप, आई एम गोना yes गो नाउ। thank you इट so वाज़ much रियली thank नाइस। you for यस, coming Rihanna यस। thank you very much थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दीज़ क्वेश्चन्स। ये मेरे लिए भी प्रैक्टिस हो गया, है ना? जवाब देना। ओके, चलो all बाय, right बाय bye bye एवरीबॉडी। see बाय, you बाय पद्मिनी। थैंक bye यू, टेक केयर।